Hello students, this is Chandana and I welcome you to the Business Studies class. In this video, we will be covering our next topic, that is importance of management. Management क्यों important है हमारी organization के लिए? So there are different points that we will be learning here. Management helps us in achieving the goal. The first point is that management helps us in achieving goal. हमें goal achieve करने में वो help करता है. Now this point we have actually discussed earlier also, and in the definition of management, the definition itself says that management helps in achievement of organizational goal. Management हमें goal को achieve करने में help करता है. अब कैसे help करता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस यूज करता है एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस? प्रोसेस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट ये 5 स्टेप यूज करता है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो दिस इज वेरी मच क्लियर विद दिस डेफिनेशन. नाउ वी कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. Second importance is that management helps to improve the efficiency. अब efficiency का क्या मतलब होता है? Now efficiency what? This is also we have done earlier and it is mentioned in the definition of management. Now we come to this definition. The definition says that management is a process. ये वही 5 step use करता है जिससे हमारा काम पूरा होता है. It helps us to get the things done. क्यों काम पूरा हो? With the achievement of organizational goal. जिससे हमारा गोल पूरा हो जाए, पर कैसे पूरा हो जाए? Effectively and efficiently. Efficiently का मीनिंग था कि हमारा काम कैसे पूरा हो जाए? Without any wastage. That means utilizing right amount of रिसोर्सेज. तो मैनेजमेंट हमें क्या करता है? वो सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. दिस पॉइंट ऑल्सो वी हैव डन इन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. Management helps to create a dynamic organization. Dynamic is changing, which does not remain same, जो बार बार change होता है. If you remember, I had given you the example of lockdown. अगर सब कुछ normal हो रहा होता तो अभी आप कहाँ होते? अभी आप स्कूल में होके स्कूल में बैठे होते और वहाँ पढ़ रहे होते normal classes में. But because environment has changed, but because of this lockdown period, now what has happened? स्कूल ने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा प्लानिंग ही चेंज कर दिया. अब आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया. अगर मैनेजमेंट इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आपको घर बैठे, स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती? नहीं. अभी आप ऐसे ही बैठे रहते घर पे. बिकॉज मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, तो उन्होंने अपना प्लान पूरा चेंज कर दिया. देयरफॉर वी से दैट इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू द फोर्थ पॉइंट. Management helps in achieving the personal objective. Now, what is personal objective? Now, in the last class, we have completed the topic of objective and we have learned about 3 objectives. First one was organizational objective, जो कि money से related था. Second one was social objective, which was related to the society. And the third objective which we learned was human objective. And human objective was related to
employees of the organization. Now that human objective is same. पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ही हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉइज से रिलेटेड होता है. तो जो भी बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के लिए करती है वो क्या होता है? पर्सनल objective. You call it as human objective also, and you can call it as individual objective also. But ये personal objective होता क्या है? This is related to giving the employees good working condition, giving the employees adequate amount of salary, giving the employees time to time training. मतलब एक organization जो employee की तरफ अपना काम करती है, एम्प्लॉय के लिए करती है, दैट इज नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव. नाउ दिस पॉइंट ऑल्सो स्टूडेंट्स वी हैव डन इन ऑब्जेक्टिव. Social objectives is related to society. Whatever a businessman does, whatever an organization does for the society, that comes in the social objective. तो मैनेजमेंट हमें क्या करता है? सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है. लाइक सोसाइटी के लिए क्या करता है? जैसे प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग देम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स, डोनेशंस देना, चैरिटी देना, ये सब किसमें आ जाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव में. सो स्टूडेंट्स, we'll be just revising these 5 points once again. So the importance of management is that it helps us in achieving the goal. हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. एंड गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है? एफिशिएंटली. एफिशिएंटली मीन्स विदाउट एनी वेस्टेज. इट ऑल्सो क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक मतलब चेंजिंग. ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाता है. फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज. जो भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की तरफ कर रही है, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज की तरफ पूरा कर रही है, वो होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करता है? ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है. एंड द लास्ट इज दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव. मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग फॉर द सोसाइटी, उसको हेल्प करने में अचीव करता है मैनेजमेंट. I hope students this topic is clear. Thank you students.